Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The world-famous Chenpatna toys from Karnataka found a special feature in Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat. But since then, there has been a lot of talk about setting up a toy village in Koppal, which is 350 kilometers away from Bangalore. But Chenpatna, which is located just 70 kilometers away from Bangalore, people here are not so excited about this whole concept because they feel that their culture, their artistry, for centuries together, for hundreds of years, has been right here. And they do not want to go and settle somewhere else, which is far away from their homes, far away from the place that is their cultural heritage. On Sunday, Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa tweeted that the upcoming toy cluster in Koppal potentially can create 40,000 jobs and attract more than rupees 5,000 crores in investments. कोप्पल हमारे से कम 250 या 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी ये सांप्रदायिक कला है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते और जगह बदल नहीं कर सकता है। उन लोगों का जो इरादा है वो अलग होता है। वो लोग शायद लगता है कि चाइना का और दूसरे कंट्रीज़ का टाइस को कम्पीट करने के लिए वो लोग टाई का हब बना रहा है, लेकिन ये चन्नापटना जो क्राफ्ट है वो सांप्रदायिक कला है, इसको आप कहीं एक जगह से दूसरा जगह बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता है। The print traveled to Chenpatna, the land of toys, to understand how the local artisans have been coping with business losses and the pandemic. A large green board proudly displays "Welcome to the land of toys, Chenpatna," as you drive into the little town on the Bengaluru-Mysuru highway. Located 70 kilometers away from Bengaluru, this little toy town has earned the sobriquet of Toy City or Kombegala Nagara in Kannada. The lacquer toy industry was popularized by the erstwhile ruler of Mysore, Tipu Sultan, whose penchant for these toys led him to train locals with his art form. As you enter the bylanes of the town, the humming sounds from the lathe machines also reflect the slow business in Chenpatna. But in recent years, the Chenpatna toy industry has been badly hit by the influx of Chinese toys. Then the COVID-19 pandemic dealt a crippling blow to the toy business, bringing it to a grinding halt. Meet Umar and Mazhar, who have been painting these lacquer beauties for over 20 years. The skill of painting gives the Chenpatna toys beautiful expressions and brings them to life. खासियत तो बहुत है, इसमें तो पूरा सिंथेटिक ये नॉन टॉक्सिक यूज़ होता है, मगर जब से चाइना का स्टार्ट हुआ है तो इसका मार्केट डाउन हो गया है। मैंने चाइना का शुरू हुआ था, अब तो चाइना का पूरा बंद है, पर अभी तो बंद हुआ है ना, अभी तो बंद हुआ जस्ट है बंद हुआ है जी। तो उससे आपको लग रहा है कि चन्नपटना के जो टॉयज हैं या टॉयज हैं, इससे फायदा हो सकता है? हो सकता है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कोप्पल में एक टॉय सिटी खोलेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे काम करने के लिए? काम करने के लिए? हाँ। नहीं, यहाँ का तो पूरा यहीं करना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ जाने के लिए मशीनरी वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, वुडन पेंट सब वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ का जो हर एक फैमिली में बहुत सारे फैमिलीज काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर है। ये कोरोना के टाइम पे कितना आपको लॉसेस हुआ है? लॉस तो 100% लॉस ही है कोरोना की वजह से। कितने महीने से आप बंद थे? लगभग तो 3 मंथ से तो लॉकडाउन से बंद ही है, काम तो नहीं चल रहा। उससे पहले से तो जीएसटी वगैरह वगैरह वो सब लागू हुआ ना, प्लान्स वैसा, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हुई थी। कोरोना की वजह से तो एकदम पूरा बंद पड़ा था ना, अभी 1 महीना हुआ शुरू हुआ। आपके जो टॉयज हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं? इधर इंडिया में भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। These exquisite lacquer toys have geographical indication status or GI status under the World Trade Organization. The toys are produced from soft ivory wood or alemara as it is locally called. The artist used ivory wood because of its softness and gives the artist a lot of flexibility to give shape to his ideas. It also highlights the bright colors of the lacquer coating. Shivalingaya's family has been making these toys for over 3 generations. Today, he has been trying hard to make ends meet. The family runs a small unit and he says this is the only skill he knows. ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಐಟಮು ಒಂದು ಇಂಕ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಬುಗುರಿ, ಅದು 21 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು 13 ರೂಪಾಯಿ 14 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ದುಡ್ಡಿರೋನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು. ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 1% ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡೌನು, ಕೆಲಸ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಹೇಳ್ತಲ್ವ, ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 50-60 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನಿದ್ರು ಒಂದು 12,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Of the 200 plus toy making units, only 25 to 30% are functional in Chenapatna. Many of the local artisans have shut their units and are now working as taxi drivers, masons, and construction workers for their survival. Karnataka's toy industry is valued at close to 160 crores, and as businesses shrunk, the number of traditional artisans in Chenapatna also declined. There were around 3,500 units in the 1990s, but now they have been reduced to around 1,500 in the beginning of this year. Karnataka is trying to promote its toys through a special city or a special place that is being dedicated to toys alone. People here who are the part of the toy culture, especially when you come into this particular district, there's a huge board that says "Welcome to Chenapatna, the land of toys." People feel that it is all ingrained here, and they would rather want the government to give them impetus from here, give them more opportunities to market their goods, not just in the country but also worldwide, because that is where they have been selling their products till now, rather than asking them to move from here or asking their artisans to move from here and move to Koppal to try and find a livelihood there. Rohini Swami in Chenapatna in Karnataka for The Print.